जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिंस। सर, जनरल नारायण इज हियर। आज हमको थोड़ा सा एक अंदर की कहानी बताएंगे। चाइना में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अभी तक हम सोच रहे थे यार शी जिनपिंग नहीं आ रहा, क्योंकि मैप्स लगाया, लोगों ने उसको पुश बैक करा। भारत की तरफ से भी एक थोड़ा सा झटका लगा। कुछ बात बन नहीं रही थी। आई मीन पूरी तरह से। देखिए, एक चीज दिमाग में आई, थोड़ा लेट आई, मैं सर से बात कर रहा था शाम को, तो एक चीज दिमाग में आई। सर ने बताया कि यार शेमलेस आदमी हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने कुछ बोल दिया तो ये लोग डर वर जाएंगे या यू नो नहीं आएंगे वहां पर एंड ऑल दैट। क्योंकि पिछली बार ही याद करिए, जब ये मोदी साहब से मिलने आए थे तब डोकलम हो रहा था। तो दे आर नॉट, इतना शेम नहीं है उनके अंदर। तो देयर हैज टू बी समथिंग एल्स। तो सर, गुड इवनिंग। पहले तो सर थैंक यू सो मच, आप इस बार ही वीक में मेरे को डबल धमाका दोगे। ठीक है आप बुलाएं और हम ना आए, ये हो सर। नहीं सकता। टू थैंक ऑल द यू आदि, व्यूअर्स, जय भारती। टू ऑल द आई एम व्यूअर्स, हियर। कल सर का बड़ा जबरदस्त शो होने वाला है। आज तो है बॉम्बशेल है। कल का भी दोपहर में, प्लीज डोंट मिस। दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी शो टुमारो इन द आफ्टरनून। इसमें हमको पता चलेगा हमारा जो लैंड है वो है क्या। सर, ओवर टू यू। क्या हो रहा है सर? शी जिनपिंग को आपने इतना तंग कर रखा है बेचारे को, वो भटक रहा है इधर से उधर। कल परसों ये एक शो में बात हो रही थी मेरी इसी चीज पे, सिमिलर चीज पे, आई वोंट से इसी चीज पे, मैप के ऊपर ही डिस्कशन हो रहा था। उस वक्त मैंने कहा था, एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि चाइना ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो तब मैंने बताया था कि आज के तारीख में शी जिनपिंग इज एट हिज वीकेस्ट मोमेंट। हम सब ने सोचा था कि जबरदस्त उसने क्राउन ले लिया, द वे ही थ्रू आउट हु जिनटाओ फ्रॉम द मीटिंग 20th पार्टी कांग्रेस की फुल दादागिरी से आया है। तब से जो डिक्लाइन हुआ है उसके कंट्रोल का, उसके पार्टी के ऊपर, हैज बीन अमेजिंग। एज वी वर डिस्कसिंग ऑफलाइन, मोस्ट चाइनीज लीडर्स, उनके शक्ल में आपको कभी भी कोई फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। इट्स द आईज, and everyone always has said it's the eyes which are the dead giveaway कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। It's a very few people who can control their feelings in the eyes also. Xi Jinping, 20th पार्टी कांग्रेस, जब वो स्टेज पे खड़ा हुआ विद हिज पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, and Xi Jinping today, look at his eyes. He looks like a caged person. You have a slideshow and we look at it as to why I am saying, and by the end of it, it should be clear why I am saying he's looking like a caged person. He doesn't look confident at all. And जब इसकी बात हो रही थी ब्रिक्स का, तब भी मैंने आपको कमेंट किया था that in that BRICS meeting also you couldn't see the confidence in his eyes. His body language was हाँ, not of a confident person. तो आपने मतलब डिग इन किया हुआ है, लेट अस कैच। एंड एब्सोल्युटली सर। जस्ट सेकंड एंड वी शुड बी एबल टू ऑनलाइन। मेरे को तो सबसे वो लगा था जब उसका वो बॉडीगार्ड को पीछे पकड़ा था ना सर। ही एंड यू आर वॉक्ड लुकिंग लॉस्ट। एंड ही लुक बैक एंड देन ही स्टार्टेड वॉकिंग। थोड़ा आगे गया, दो तीन कदम लिए, फिर खड़ा हो गया, फिर इधर उधर देखा, फिर पीछे देखा, फिर सामने देखा, और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सामने खड़ा, उसको बोल रहा है भाई आजा, तेरा हाथ मिलाना है मेरे को, करके रहे। बट ही जस्ट डिडंट गो। वो बड़ा अजीब था। हियर वी हैव सर प्रेजेंटेशन गाइस। सबसे पहले लाइक शाइक दबाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, दिस एपिसोड नीड्स टू गो वायरल। प्लीज हेल्प मी विद दिस। सबको भेजिए, क्योंकि ये चाइना की अंदर की कहानी सर बताने जा रहे हैं। तो सर, लेट्स गो सर। या दिस समिट विच इज स्किपिंग इज आर G20 इज नॉट कमिंग। एंड तो आसियान आल्सो सर। हाँ, और उसके नेक्स्ट आसियान। तो वाई वी आर सेइंग इज नॉट कमिंग, हफ्ता बचा है, 8 तारीख को शुरू है। अभी तक रिटन ऑफिशियल कंफर्मेशन अनलाइक अदर कंट्रीज नहीं आया है।
and अभी तक MEA has not allocated a hotel. Most of these countries, people who are coming, each of them is being given a hotel and with all their security around them and everything around, so that it's easier to manage. सबके nominations हो गए हैं except China. पुतिन इज नॉट कमिंग, लावरोव इज कमिंग, उसके लिए उसका जगह तैनात है जहां जाने वाला है. बट इसका अभी सुनने में आया है कि शायद ली चांग आएगा. अब बोलेगा क्या बोलेगा पता नहीं. सो लाइक आई वाज सेइंग, ही इज एट हिज वीकेस्ट मोमेंट. आपने बोल दिया डेंजर में, हो सकता है उसे डर लगा हुआ है कि कहीं कू ना हो जाए. एंड स्पेशली नाउ दैट बोथ गैबॉन एंड नाइजर में हो गया है, इसको और भी डर लगा होगा पीएलए का. जब ही हर बार देखो पीएलए को बोलता है ओबेयस 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 ओबेयस. डर है. आगे चलते हैं. या हमने तो रॉकेट फोर्स के इन्वेस्टिगेशन और वो सब का सुना हुआ है. इनका जो हैंड पिक्ड बंदा था, द फर्स्ट जब रॉकेट फोर्स बनाया था उसका कमांडर बना वो. उसके बाद पिछले इसमें ही वाज हिज डिफेंस मिनिस्टर वाइफेंगा. उसको खुद को पकड़ा हुआ है कि भाई आप क्या कर रहे हो, और ओपनली बोल नहीं रहे हैं उसके बारे में. हालांकि उनके वेबो वगैरह के थ्रू और बाकी जो आसपास हांगकांग और बाहर जगह वॉचर्स हैं वो बता रहे हैं वो सबसे पहले वो हिट हुआ था. उसके बाद फिर बाकी रॉकेट फोर्स वाले पकड़े गए. लेकिन अब आप ये पढ़ लो, भूशियान बोल रहा है एवरी केस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, करप्शन मस्ट बी पनिश्ड. अरे यार वो स्टेट लेवल का ऑफिशियल है, वो कैसे करप्शन का क्या बोल रहे हो. तो कंसल्टेटिव कमेटी कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन भी कह रहा है इन्वेस्टिगेट करना है और ये चल रहा है, होगा. आई एम श्योर उससे पूछा होगा, लोग पूछ रहे होंगे. क्योंकि इसके साथ साथ एक और जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का पॉलिटिकल कमिश्नर है, वो पिछले साल अक्टूबर से मिसिंग है. उसका कोई खबर ही नहीं है कहाँ है. उसका हेड को तो अभी निकाला है, लेकिन पॉलिटिकल कमिश्नर पिछले साल से गायब है. मतलब कुछ. अब ये तो this looks to me as a tip of the iceberg. There's many more, lot more, I think, pushbacks happening against him, and so he's going berserk on his purges. It's not as if corruption as कि बाकी सब दूध के धुले. ये इसके खुद के बिलियंस इन्वेस्टेड है. Obviously. इसकी बेटी पढ़ती है वहां पे यूएस में, हार्वर्ड इसके यूनिवर्सिटी. खुद के बिलियंस इन्वेस्टेड है. So we can go next unless you have something to add. नहीं सर, ये एक लास्ट लाइन, ये जो इससे कमेंटेटर से पूछा था, चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कांग्रेस CPPPCCCCCC, इनका हर चीज में C और P और C होता है. लू सिन्हुआ, इसने सर बोला कि भाई वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट वाला, वी विल नॉट स्पेयर एनीबडी, जो भी होगा, जो भी रैंक का है, डजंट मैटर, नो मैटर हाउ हाई, वी विल क्रैक देम आउट एंड दिस एंड दैट. एंड इसका फाइनल लाइन था एक, कहता है आई कैन ओनली आंसर दिस. मीन उनको पता ही नहीं ना किस चीज के चार्ज पे. अब ये सब पकड़े गए हैं, वो तो डिनाई कर नहीं सकता क्योंकि दे आर आउट. बट एडमिट कैसे करेगा कि हुआ क्या है. कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है. कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है. अगर बगैर ऑफिशियल स्टेटमेंट का वो बोल दिया तो उसको पता है कि अगला नंबर उसका होगा. He will be sharing same space like the people who have been purged. तो इसीलिए वो कहता है ये है, and you understand, मतलब समझ जाओ कि पर्ज हो रहे हैं. विंक विंक है. How long can you defend the indefensible? You can't. The cloak of corruption, that veneer is running very thin now. It's running very thin because the font of corruption is the state owned enterprises. उसको तो हाथ नहीं लगाया तुमने.
वो तुम्हारे साथ है, उसको तो हाथ ही नहीं लगाया तुमने. That is the font of all corruption. Everybody who is a China watcher and everybody who is a Chinese knows that. So now that veneer is running a bit thin, when you find that he is removing people who he is feeling threatened with, that they are likely to be with a faction within the CCP which is against him. Like in our last thing, I had given you the multiple factions that are there. You have the Zhejiang faction, Fujian faction, Shanghai faction तो है ही है. अब ली शांगफू को अरेस्ट कर दिया, आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स. आगे बता, उसका डिस्कस करेंगे. मिसिंग. Sir, ये तो breaking news दे रहे हो. Are you trying to tell me, sorry to interrupt you, that the defense minister of China, yes, Mr. Li or General Li Shangfu, yeah, has been arrested? should be, because he is missing. He is missing. मीटिंग में नहीं था यार, वो आगे आएगा ना. मीटिंग में नहीं था, बट उसका फैक्शन था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का फैक्शन है. then there are some who have his filial ties with him, and then there is a group of others, and 3 बंदे थे जिनका नाम मैंने दिया था, जो अपने आप को पीछे रखे हुए हैं. तो 2 prominent are Wan Huning, the greatest survivor, who's 92 से चला आ रहा है with Jiang Zemin, Hu Jintao, and now इसके 2 टेन्योर और तीसरा टेन्योर भी सर्वाइव कर गया है. and Wang Yi. These 2 have not gone to any faction. The faction, तो it is very clear now you are taking out people whom you think, and there are reports, आगे में चलो चलते हैं, मैं बताऊंगा of what it is. अभी ये रॉकेट फोर्स वाले निकले, इनके साथ लिंक किया था लोगों ने चिनगांग को. उसका लिंक हुआ था एक लड़की के साथ, वो फिनिक्स टीवी रिपोर्टर के साथ, वो इज इज कॉन्कुबाइन. उनको निकाला है, सबको पकड़ा हुआ है, टू से दैट दे वर पार्ट ऑफ दैट, शी इज पार्ट ऑफ द बोजिलाई कैंप. अरे यार, बोजिलाई को तो 2012 में आप लोग सब ने जेल करके लाइफ सेंटेंस पे बैठा हुआ है. वो उसकी बीवी को तो डेथ सेंटेंस दे रखा है, अभी नहीं किया हुआ है, बट डेथ सेंटेंस रो में बैठी है, वो डेथ रो में. वो खुद लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है. मतलब देयर वाज समथिंग रॉन्ग दैट पीपल आर स्टिल फॉर बोशिलाई, दे आर स्टिल यर्निंग फॉर बोशिलाई. आपने इतना गंद फैला दिया दैट पीपल हैव स्टार्टेड यर्निंग कि यार गलती कर दी, हमें बोशिलाई को ही लेके आना था, इससे गंदा तो नहीं होता, इसको क्यों ले आए. या नहीं, कहां बोशिलाई और किसके साथ लिंक कर रहे हो आपके बंदे. ठीक है, आप कह रहे हो कि हमने करप्शन का रिपोर्ट वाइफिंगर के निकलते ही शुरू कर दिया था, वो तो 2018 में निकला था यार, 17 में से. तब से आप शुरू कर रहे हो, तो अभी तक क्या कर रहे थे 6 साल. बाकियों को तो चुटकियों में निकाल दिया था, तो इसके 6 साल क्यों लग गए. नहीं, किसको उल्लू बना रहे हो यार तुम. बंदों को तो आते ही साथ आपने निकालना शुरू कर दिया था. और हर बार आपका जो भी मिलिट्री के साथ, और इसका ये तांता रखा है राइट फ्रॉम द डे ही टुक ओवर, और अब तो और भी ज्यादा हो गया. पार्टीज एब्सोल्यूट लीडरशिप ओवर मिलिट्री, पार्टीज एब्सोल्यूट लीडरशिप ओवर मिलिट्री. अरे यार, एवरीबॉडी नोज कि पीएलए इज द सीसीपीज मिलिट्री विंग. तुम्हें क्यों शक हो रहा है. शक होता है जब डर होता है कि शायद मैं जो कहूं ये माने नहीं. तभी गुतियान कॉन्फ्रेंस सेकंड टाइम हो गया सर इसका रेफरेंस. या अब गुतियान कॉन्फ्रेंस में तो वो 2029 था, 27 में ही मिलिशिया बना था ये जी. रेड वर्कर्स एंड पेजेंट्स मिलिशिया बना था, जहां से उसको रेड आर्मी बना रहे थे आप. तो उस वक्त तो कहना वाजिब, मैं समझता हूँ वाजिब है, उनको बोलोगे कि भाई जो हम कह रहे हैं वो करो, तुम करो. ये तो शुरू का है. आज तुम थोड़ी बोल रहे हो यार, 70 साल से ऊपर हो गया, तब भी बोल रहे हो तुम उनको कि मेरी बात मानो. मैं बोलता हूँ ना सर, जूनियर माओ. अब
जूनियर माओ तो अपने आप को वो समझता है, बट आई थिंक ही इज अ वेरी पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माओ. माओ तो फिर भी लड़के सब कुछ किया, विच एवर वे ही फॉट. He did his long march and then he did his civil war. Yes, he had used subversion. That was the lesson that they learned, which I have written in my book also. वहीं से सीखा है. Whichever way they fought ना. जी इसने कौन सी लड़ाई लड़ी है? That was the only reason why he brought in his blood brother Zhang Youxia in to the CMC और जल्दी जल्दी उसको जनरल बनाया, because he is the one person who was a company commander in 79 during the Vietnam War. अब क्या वियतनाम सीखा वॉर, होगा यार, पिट पुटा के आया था वहां से. 30,000 और मार के मरवा के आया था. या नो 2 लाख मरे थे उनके यार, चाइनीज के 2 लाख. नहीं, इसकी यूनिट के अंदर 30,000 मरे थे सर. इसका जो ये जिस तो यूनिट में था कंपनी ये, था ना. नहीं ये हाँ नहीं, कंपनी कमांडर था. जिस कंपनी स्ट्रक्चर में ये था कमांडर. सर, उस हाँ स्ट्रक्चर में 30,000 मरे बंदे होंगे. मरे थे. ये तो कंपनी कमांडर था. अब उसको लेके आया, एंड ही इज द ओनली वन विद whatever be his experience in combat, he is the only one who's there. गोली चलते देखी है जी. हाँ, he is the only one who's there. और कोई है नहीं. ठीक है. सो नेक्स्ट लिखते हैं कि भाई पूरा यही चल रहा है, लिखित डेली पब्लिश कर रहा है कि आर्मी इनके लिए, पार्टी के टास्क के लिए है. इनका टास्किंग भी देख लो. द फर्स्ट टास्क ऑलवेज गिवन टू द PLA इन देयर व्हाइट पेपर इज टू एंश्योर द कंटिन्यूड रूल ऑफ CCP. टास्क उनका ये है. ठीक है. एंड ही इज एब्सोल्यूट लॉयल्टी टू द पार्टी. एब्सोल्यूट. बार बार तुम यही कह रहे हो. तो दाल में तो जरूर कुछ काला है. दाल में जरूर काला है. और वो तो पिछले एक शो में आपको बोला भी था मैंने कि December 20 to August 21 3 बदली होके चौथा आया वेस्टर्न थिएटर कमांडर. दैट इटसेल्फ टेल्स यू. और जो बीच में आया था अभी वाला, जो August 21 से पहले आया था, वो तो बेचारा July 21 को ही टेक ओवर किया. अगस्त में किधर गया, कहाँ गया, किसी को नहीं पता. आई वॉज ट्राइंग टू ट्रॉल द नेट ऑल्सो एंड टू फाइंड आउट कि भाई बंदा गया कहाँ है. नहीं है, कोई कॉर्नर में बैठा है समवेयर. There's no reason given also why he was shifted. He used to be the, if I remember correctly, the ground force commander. वहीं की वहीं उसको बनाया, फिर उसको हटा जी. दिया. हायरार्की में है नहीं. चलो जो पहला वाला था जो रिटायर हुआ, उसको समवेयर आई थिंक NPC या कहीं कहीं उसको कोई वाइस प्रेसिडेंट बना के बैठा दिया. नेक्स्ट कहते हैं भाई कैंसर से मर गया. इतना जल्दी मरा मतलब कैंसर का लेवल तो काफी हो गया था. मतलब आपका हेल्थ सर्विस क्या है, मेडिकल क्या है यार? हाउ वाज द पर्सन क्लियर्ड? 15,000 फुट पे लड़ रहा है वो. हाँ नहीं, कैंसर द रीजन इज, इफ इट इज, आई कैन अंडरस्टैंड कि लेवल 1 में है, तकरीबन लेवल 2 तक आता है, पता नहीं लगता है आपको कि कैंसर है. बट अगर बंदा मर गया है, दैट मीन्स इट वाज ऑलरेडी लेवल 3 स्ट्रोक लेवल 4 तक पहुंच चुका था. वो छुपता नहीं है. और जब भी लाइक all armies, if you're supposed to pick up your next rank, you're supposed to give a medical certificate. You're medically fit, yeah, to assume that rank. If you don't give it, you cannot assume that rank. किसने दिया था इसको सर्टिफिकेट? जस्ट बिकॉज कि कापो दी टूटी कापी ने बोल दिया कि ये बनेगा तो मेडिकल वालों ने दे दिया. दैट इज एग ऑन योर फेस. है मर रहा है बंदा, उसको ले आया. और दूसरा जो बंदे को बनाया था, तो there is something is amiss between him and PLA. या अब टाइगर्स में आप देख लो, जो पिछले वाइस चेयरमैन थे वो बोजियांग और चुकाई हाउ, फांगफेंगा हैंड पिक था. 2016 में जब जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट बना था, उसको हेड बनाया था. ये और इसका दोस्त सुनझेनकाई, वो इस कम्युनिस्ट लीग
यूथ लीग से है, he was considered as the nominated successor for taking over from this chap अपना शी से। तो उसके सेकेंड टर्म बायदेहा के सेकेंड टर्म के पहले इनका अगस्त में बायदेहाई का मीटिंग होता है, बेदहाई, बेदखल। उसके एक हफ्ते पहले रातों रात दोनों के दोनों को उठा लिया। एंड छोटे नहीं है बंदे सर, दे आर नॉट स्मॉल पीपल। नो, दैट्स लाइक इंडिया में पिकिंग अप द सीडीएस एंड सॉरी द डेप्यूटी सीडीएस और समथिंग लाइक दैट एंड द सीडीआईएस। यस, जस्ट टेकन देम आउट। सीडीआईसी उठा के साइड में। वो सुन गेनकाई वाज द वाइस प्रीमियर, उसको निकाल दिया। This chap was the joint staff department head. He जॉइंट was स्टाफ। equivalent to CDS के headquarter में chief of general staff. जी। Just sack him. Now, like I've always said, Zhang Yang तो committed suicide because वो suicide कर लेता है तो उसके बच्चों को वाइफ को पेंशन वगैरह मिल जाता है। मिल So जाती a है। lot of people prefer to go down the suicide route. But the issue is not that. Issue is that these people don't come alone. Press unfortunately only talks about them. Because when you have reached a particular appointment, all armies give you a personal staff. So they look after you throughout. So वो personal staff होता है आपका. And at that level, you will have at least minimum a brigadier, senior most, who's there with you in your personal staff. That is उनका senior colonel होता है. Now, the next issue is when you are sitting there, अपने चहेते को आप वेरियस सेक्शंस जो आपके नीचे हैं वहां पे हेड डालने के लिए अपने चहेते को लेके आते हो कि आई ट्रस्ट हिम, ही विल डू अ गुड जॉब, वो लेके आएंगे। तो जब एक बंदा ऊपर का उठता है ये सारे जाते हैं, इकोसिस्टम ना पूरा सर, वो पूरा उसका इकोसिस्टम जाता है। उनका क्या हुआ वो नहीं बताते ये लोग। अभी सुनगेनकाई का ही ले लो, ही वाज अ वाइस प्रीमियर, उसके खुद के पॉलिटिकल पर्सनल स्टाफ रहे होंगे, उसके खुद के पर्सनल स्टाफ रहे होंगे इन हिज डिपार्टमेंट, वो सारे गए। एंड व्हाई आई एम सेइंग इट, आप लिंक कर रहे हो चिंगांग एंड अदर्स एंड दैट लेडी हु अ लॉट ऑफ पीपल से शी इज पार्ट ऑफ एमएसएस विद बोजीलाई। ठीक है, आई रेड दैट फार आल्सो कि ये जो सोरोज का एमएसएस के साथ लिंक होता था सर 80s का, रहा ये होगा यार। उसमें नहीं था सर, बड़ा जबरदस्त लिंक था सोरोज का एमएसएस के साथ, वो काफी काम करता था इनके साथ। एंड ये जो आंटी जी हैं ये उसका मतलब सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट है। वाओ। एंड सोरोज इज पर्सोना नॉन ग्राटा इन चाइना, वो तो उड़ा दें उसको। Yeah, you would have tried to penetrate ना। हाँ, नहीं टंग ने फेंका था ना सर उसको निकाल के, 1989 हुआ एंड ही ही प्लक्ड आउट फेल्ट ऑल कि दिस। इसके कारण ही हुआ है तो वो प्लस वो सीआईए ऑफिसर्स मारे थे, कोई दो तीन बिल्कुल। सौ मारे थे इसने, जितने स्पाइस थे सीआईए के वो सब उड़ा दिए थे इसने। तो उस टाइम पे इसको निकाल के बाहर मारा था इसने। या जाओ यांगकांग, सुन गेनकाई जिसका मैंने बोला, जुकाई हाओ, वो तो बेचारा they didn't even spare him. I don't know, I don't think they gave him treatment also. He had cancer. When he was arrested he had cancer and he died of cancer. गोबो जियांग तो है ही है, लिंगजी हुआ है, एंड लिंगजी हुआ इज खुंदक में because the director of the general office in CMC में भी बनाया है is the personal staff। जी। जैसे हम बोलते हैं ना एमए है कि भाई उसका पर्सनल सेक्रेटरी है, जैसे पीएमओ का पीएम का पर्सनल सेक्रेटरी होता है, लाइक दैट दिस पर्सन इज देयर। तो आप उसको भी टारगेट कर रहे हो, तो इसके खुद के बंदा जो है उसको भी डर लग रहा होगा यार, जब अगला आएगा तो मेरी बारी भी आएगी, मेरे ख्याल भाग जाएगा वो देश छोड़ के। वांग किशान के भी आ रहे होंगे, मस्ट बी हैविंग नाइटमेयर्स कि यार इतनों को मैंने पर्ज किया है, अभी तो मैं पर्ज नहीं कर रहा हूँ, इतनों को पर्ज किया, सुनगेनकाई वगैरह को तो उसी ने पर्ज किया था। काइची। जब ब्लोबैक आएगा तो क्या करूंगा।
वो काइची मेरे जैसा जो गंजा है नहीं, काइची तो जनरल ऑफिस का है, लिंजुआ के जैसे, बट वो सर तो ही इज डर्टी ट्रिक्स पकड़ा डिपार्टमेंट जाएगा। है सर। चल नेक्स्ट देखते हैं। या आई एग्री विद द सिटीजंस यार। ये मतलब दिस वाज नियम- जबरदस्त। आई वाज लाइक यार भाई ये क्या है। नहीं, ओपनली कह रहे हैं ना हम एसएस हैं। आपका पीएलए आर्मी नहीं है, इट इज द एसएस that you serve the dictator, because CPC they're relating it to dictatorship. Now that is dangerous for CPC if this is the chat which has come, that the people have started linking you to dictatorship and linking you to Hitler, and they're comparing you to the Nazis. So that should worry, and I think that is worrying what is should be worrying the CPC, and that is why she is worrying, because they would have linked it कि all this has been brought to us here where people are openly comparing us to Hitler is because thanks to Xi. कि अब कह रहे हो कि भाई the PLA is CPC's stool stuffing SS. So there is Yeah. I mean And they have it's openly now they're what we have been saying always, that PLA is not the army of China. जी जी PLA is army of CPC. Now these people are openly selling that you are now telling that the CPC is SS, the PLA is SS and not the Wehrmacht. Wehrmacht was the German armed forces, whereas the SS was not the German armed force. was the SS party's armed were the forces. military of the Nazi party. तो नाउ ये अगर ओपन आ रहा है, मीन्स इट्स अ कॉज फॉर वरी, बिग कॉज फॉर वरी. ओके, चल नेक्स्ट. फटाफट ट्रांसफर करे जा रहे हो और हलाल भी नहीं कर रहे हो, आप तो झटका कर रहे हो. यानी जो आपके थिएटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर्स ईस्ट साउथ एंड वेस्ट आज के तारीख में, जिस नॉर्थ यस जापान के साथ चल रहा है, बट सबसे ज्यादा झगड़ा आपको ताइवान है, साउथ चाइना सी और इंडिया है. ईस्टर्न थिएटर इज ताइवान, सदर्न थिएटर इज साउथ चाइना सी, जिसको मैं बोलता हूँ इंडो चाइना सी, एंड इंडिया इज वेस्टर्न थिएटर कमांड. वहां पे आप सीनियर कमांडर्स को इतना ट्रांसफर करते रहोगे तो स्टेबिलिटी कहाँ है बंदे में. और वो भी एक साथ सर, यस, 2 दिन इसको के वहां भेज अंदर दिया, उसको यहाँ भेज दिया, मतलब कोई 5 में से कोई 3 समझ थिएटर्स नहीं में आता हाँ, कि भाई अभी जैसे डिप्टी कमांडर वेस्टर्न थिएटर कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड डील्स विद माउंटेन वॉरफेयर. वेस्टर्न थिएटर कमांड डज नॉट डील विद एम्फीबियस ऑप्स at all. करेक्ट, उसको साउथ में डाल दिया Now जाके. you have sent him to Southern Theatre Command, which deals only with amphibious ops. अब He's वो like a सोच रहे fish out of water, यार. ताइवान, नहीं नहीं सर, ताइवान का वो जो वो पहाड़ है ना छोटा सा, नहीं, वो चढ़ेगा वो. वो तो बाद में आएगा ना. It is total amphibious operation, यार. I don't know what his plan Right? is. And everywhere, I'm sure in their army also, they must be working towards that, because they look at the Russians, they look at the Americans. The जी deputy commander जो भी होता है, at whatever level formation, he is responsible for operational logistics. Right? So now let's look at the difference. He has been looking after the operational logistics of mountain warfare. उसको उठा के आपने भेज दिया at this level of command, that you go to look at the operational logistics of amphibious warfare. And amphibious warfare, both are different as cheese from chalk, and both are not easy to understand and grasp. यार, बहुत पढ़ना पड़ता है. और इतने अलग अलग तरह के आपके पास शिप्स हैं वहां पे. तो आई पिटी द पर्सन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द लोडिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ ट्रूप्स इन द ईस्टर्न फ्लीट एंड सदर्न फ्लीट. इतने अलग अलग तरह के शिप्स हैं आपके पास. आपके पीएलए नेवी में इतने शिप्स नहीं हैं
By order, you have ordered all these ferry boats and others to be made as per your plan so that you can roll on and roll off your troops. How do you manage? There is no set load pattern. यूनिट जो जा रहा है, शिप में जाता है, तो उसको पता होता है कि भाई ये शिप का अंदर का लोडिंग बेस का साइज क्या होता है. तो आप अपना लोड पैटर्न बनाते हो. आपका, क्योंकि जब लोड बनाते हो तो उसके मुताबिक आपके बंदे भी होने चाहिए. अगर बंदे को भेज रहे हो तो उसका लोड साथ में जाना है. ये नहीं कि बंदा पहुंच गया, साला लोड बाद में आ रहा है, लड़ेगा कैसे? So you got to mate them together and send. राइट. अब यूनिट प्लान कैसे करेगा जब उसको घट्टा पता है कि कौन सा शिप मिलने वाला है उसको. और शिप में लाइक एयरक्राफ्ट्स, द लोडिंग स्पेसेस आर रिस्ट्रिक्टेड. So you got to create your pattern of loading. So you make a proper loading pattern. Even for us in the army, जैसे I am from the armored corps, हमें loading बहुत ध्यान से करना पड़ता है because there is a X number of vehicles only that are available to you. हर एक गाड़ी का लोडिंग पैटर्न हम बना के रखते हैं, क्या क्या लगेगा, क्या सामान आएगा, कितने लोग बैठेंगे, कौन सा सामान किधर रखा जाएगा, उसको सिक्योर कैसे किया जाएगा. क्रॉस कंट्री मूव में ऐसी खुले नहीं जाते हैं. ईच आइटम इज सिक्योर्ड. शिप में भी वो सिक्योर करना है. लुक एट द वे द स्वेल्स ऑफ द सी विल टेक प्लेस. यू हैव टू सिक्योर इट. तो पागल हो जाएगा बेचारा आईपीटीएम. आई मीन, एंड दूसरा चीज उसको आपने एक वॉर थिएटर से निकाला विच इज फेसिंग इंडिया, भारत को फेस कर रहा है, एंड क्रिटिकल थिएटर है, आपने उठा के उसको ताइवान के अगेंस्ट में फेंक दिया. या दूसरा क्लासिक देखो, पुराना जो कमांडर था सदर्न थिएटर का एयरफोर्स का, उसको पहले बनाया ग्राउंड फोर्स कमांडर. अब उसको वहां से निकाल के डिप्टी कमांडर भेज दिया वेस्टर्न थिएटर कमांडर. Now just look at an Air Force commander being placed as an army ground force commander in the same command. आता नहीं सर. चलो पॉलिटिकल कमिश्नर को निकाल के आप भेज रहे हो, that's okay, fine. He will only be, he is not controlling anything other than seeing कि भाई how much control they, how much loyal they are to the party. अब डिप्टी कमांडर है सेंट्रल थिएटर का एयरफोर्स, उसको चलो प्रमोशन बना के दिया है, मतलब तुम्हारा हैंडपिक बंदा है. वेस्टर्न थिएटर का एयरफोर्स का कमांडर बना दिया है. तो अब ये काफी सडन डिसरप्शंस आप देख रहे हैं. तो इट इज इंडिकेटिव दैट अगले साल तो मेरे को कम ही लग रहा है कि कोई झड़प करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रेशर आ जाएगा तो मरता क्या न करता. फिर तो ऑल आउट है ना सर. मरता क्या ना करता. या ये दिस वाज, आई मीन, ये बड़ा, दिस वाज, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज जब कोविड हुआ था तब भी मैं काफी रिसर्च उसका कर रहा था. आर इंडियन आर्मी एंड नेवी भी, एयरफोर्स भी, हमने अपने पूरे हेल्थ सर्विस खोल दिए थे सिविलियंस के लिए. वी सेटअप, हमारे ऑपवर्क से हम शेल्टर्स वगैरह बना सकते थे. वी क्रिएटेड ह्यूज स्टेडियम के अंदर बनाए हैं अपने हॉस्पिटल्स, टेम्पररी हॉस्पिटल्स टू केटर फॉर द ह्यूज सर्ज ऑफ पीपल. दे वर मिसिंग इन एक्शन. हालांकि वुहान इज द हब ऑफ द जॉइंट लॉजिस्टिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. दैट इज देयर मेन लॉजिस्टिक्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. जब ये जॉइंट लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर बनाया था, वुहान इज द प्लेस. वुहान से हुआ है, आप बंदे ही नहीं निकले यार. So I am not surprised कि फ्लड्स हुआ, they have not gone. एंड ऊपर से उसको फेक न्यूज बना के चलाते हैं. अब लोग बाहर का प्रेशर आता है ना, बाकी सब जगह फिर लोग बोलते हैं ना कि बाकी देशों में होता है तो उनकी फौज नहीं तो नेशनल गार्ड कोई ना कोई पहुंच जाता है. The last time the PLA went, I remember, is only during Sichuan earthquake. I think 2008 में हुआ था. That is the only time I've seen them come out like this. After that, so they came for COVID much later, much later.
after a lot of pressure came and people started asking कि भाई बाकी countries के military सब कर रहे हैं, हमारी military कहाँ है, then they started coming up. Otherwise they did. ये floods, and it was so clear that they were trying to protect their place where the top hierarchy stays in Beijing. Flood waters were coming there, so they diverted it out. तो मिलिट्री को तो बोल सकते थे तुम यार ये डाइवर्शन हो रहा है, बंदों को बचाओ. कैन यू इमेजिन, मेन सिटी बचाने के लिए तुमने 3 स्मॉल टाउन्स डुबा दिए, खत्म कर दिए और डिप्लॉय भी नहीं किया फौज को. दिस वाज हार्ट ब्रेकिंग. और ये बाय द वे एक बार ही नहीं सर, ये हर साल करते हैं. मैं इनका 2019 से 18 से देख रहा हूँ सर इनको, ये फ्लड्स को. अभी 5 साल हो गए हैं सर. दे एक सिटी को बचाने के लिए 3 और छोटे टाउन्स उड़ा देते हैं. कि भाई अभी भी जैसे आई वाज किसका वो लेज का ही एक इंटरव्यू देख रहा था, जो लेज रियल टॉक करती है, ऑन सम अदर चैनल शी वाज गिविंग एन इंटरव्यू वेयर शी सेड शी वाज quoting a report by some lady in China who has written that the unemployment rate, which they have stopped since last month onwards, they have stopped giving the unemployment rate. She said the unemployment rate reflects only the urban area. They're not giving it for the rural area. And employed means 2 घंटे आपके पास अगर हफ्ते में काम हो तो you're considered employed. हफ्ते में 2 घंटे. And rural area में they take it कि everybody is employed. So that's good, yeah. That's a scream. चलो next. या बिल्कुल कि लॉयल्टी, एब्सोल्यूट लॉयल्टी, ये सब बार बार कर रहे हो, पर्जेस कर रहे हो, ये करप्शन नहीं. These are loyalty issues not to Communist Party but to Xi Jinping. That it is loyalty issue. They have to be loyal to Xi Jinping. Communist Party गई तेल लेने. If they are not loyal to him, they are out. So that is where I feel the pushback is coming and he's feeling the pressure. And that is why that kind of body language in BRICS. And lag raha tha, there was a lot of chatter abroad also that he might not come for G20. Lagta nahi hai ye aayega. Because his confidence level was very low. And BRICS में तो he had to only face India. Openly कह रहे थे वेस्ट वाले चैटर में कि in SCO and BRICS he had to only face India. And the way India by itself stood up to him showed the decline in confidence from SCO to the BRICS. And G20 he will not be able to face because the West and India will be together and he will not be able to face so many voices. अकेला पड़ जाएगा. That was one. But the more important thing, I think what you have dug out and brought out is more true, that वो तो shameless है. Like शुरू में भी बोला था, वो तो आ जाता, कुछ भी statement दे के आड़ा टेढ़ा दे के निकल जाता. Wolf Warrior तो इसी ने शुरू किया था. I think he is facing severe internal challenges. And he's scared that if he comes out along with his चीफ ऑफ बॉडीगार्ड जो है उसका जनरल ऑफिस वाला काइची, उसको काइची उसको निकाल देंगे. या ये 2017 से शुरू कर रहे हैं. यानी आप लोगों को दबाव डालने के लिए उनके लिए मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं. अब जैसे ली शांगफू है, इक्विपमेंट डिपार्टमेंट तो इसके ब्लड ब्रदर से लिया था, झांग याउजिया से. अब 2017 का आप बोलोगे तो व्हाट स्टॉप्स हिम फ्रॉम ओपनिंग अ फाइल एंड सेइंग कि यार ये तो 2016 से जो डिसाइड किया था वो मैं कर रहा हूं. देन व्हाट डू यू डू? वो तो सर उसका भाई है. लेकिन बट वही तो बोल रहा हूं ना, ली शांगफू व्हाई आई एम सेइंग इज इन ट्रबल. सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ लो. मिलिट्री पार्टी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस where they were, जो दिखाया था, where they were talking of absolute loyalty of the military to the party, and the Minister of Defense himself is गायब.
तो किससे बात कर रहे थे आप? डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं है वहां पे। सो कुछ है। आप, पीपल मस्ट बी वेरी एंग्री। ज़ैंगियोजिया को जो रीइलेक्ट किया है, ये तो बुढ़ा हो चुका है। जो एज लिमिट है, ही इज गॉन पास्ट हिज एज लिमिट. You have taken out age limit for the chairman and the vice chairman. Fine. So you and Wang Qishang have no tenure. This chap is there as a tenure. Yeah, he's old, but you brought him. He's Very supposed to be a hardcore follower. important. Like I said, I have been reading. Rand का report भी है, Taiwan का भी report है. There are other reports that their military is not up to the mark. And there was a report I'm not finding, based on which there were 2-3 podcasts which said that Tangshan, which is next to Tianjin, which is the port for Beijing, जी so you can't do there. So Tangshan में एक port है which replicates a similar port in Taiwan. उसका भी नाम टी से शुरू होता है, अच्छा सेई ओके वा ऐसे ही कुछ है, नॉट हाँ टाइपे, सेई समथिंग ऐसे ही. हम्म And they attempted a proper amphibious landing there with a blue force protecting them. Blue force was American. Their blue force is American. And it failed miserably. मेरे किताब में भी मैंने दिया है the 5 things that their commanders are never able to do. And देखता हूँ मैं, yeah, there are 5 things, और वो 5 things अभी भी वैसे ही चले आ रहा है. His people are not able to know कि कैसे, how to do it. That is the whole problem. They don't understand the commander's orders. They can't grasp a situation. They can't take a decision. They can't indicate clearly to the people, to the higher up कि हो क्या रहा है वहां पे सामने. अब इस तरह के लीडरशिप आप लेके आओगे तो लड़ाई क्या लड़ोगे यार? हम तो जब शुरू करते हैं बचपन से, जैसे ही when you get into the military training and when you are taught, like you're going as a scout, or I'm a troop leader or a section leader, at what at what time, at what place, what did you encounter, what are you doing, ये don't ask this at what तब का पड़ा हुआ है यार. कब? 1975 सेकेंड हाफ, जून टू दिसंबर टेन्योर में पहली बार हमको मिलिट्री ट्रेनिंग का सिखाया गया था. सेकेंड टर्म इन एनडीए, आई एम टॉकिंग ऑफ 1975. एट व्हाट रगड़ के एट व्हाट कि कोई कांटेक्ट होता है तो आपको ये बताना है टाइम क्या है, आप कहाँ पे हो, दुश्मन कौन था, वो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो. जी अगर यही चीज बेसिक तुम बोल रहे हो, तुम्हारे सीनियर कमांडर्स और कमांडर्स एट एवरी लेवल नहीं बता सकते, तो बोल क्या रहे हो तुम यार? क्या लड़ने जा रहे हो तुम? This is what happens when you either buy your rank or you have only your loyalists there. and I was shocked to read that. Yeah. Right? हाँ, could be. I feel that she को धक्का दिया जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है और उससे कुछ करवाया जा रहा है ताकि, आई थिंक नाउ सीपीसी इज स्लोली थिंकिंग कि इसका विंग्स ही क्लिप नहीं करना है, इसी को आउट करना है. नहीं से ये मेरे को पता है कहाँ से आया. वो जो काइजिया है ना, हाँ जो सीसीपी की ये टीचर होती थी, हाँ हाँ हाँ. शी इज रिटन एन आर्टिकल अबाउट, बहुत पहले लिखा था ये, अबाउट शी जिनपिंग का मेंटल स्टेटस, इन द सेंस उसकी Yeah, मेंटल that I've read. कैपेबिलिटी क्या. For the people who are listening in,
she was doing quite well in the party, and it's a very important post where she used to teach the party cadres. वो पार्टी का स्कूल होता था, वहां पे हैंड पिक्ड पीपल जाते थे who teach them, who teach their people about what communism is all about and how to go about it and what is the culture there. And that is where she felt stifled when she found that she was not able to tell openly what she was doing earlier during Jiang Zemin and Hu Jintao's time, and under Xi Jinping she was being stopped. And I think 2015 or something she defected to US. चल, आगे वो. Just a background to the people to know who she is. जी. Yeah, coup का rumor आया था बहुत जबरदस्त. And of course you can link it that 14 days he was not visible. Maybe he was under quarantine. And the third thing was that it was his own self-generated to see who all are anti him. उसके बाद भी पर्जेस धड़ाधड़ चले जा रहे हैं. ठीक है, तो वो सब ठीक है सर. फिर मिलिट्री कमीशन का सेमिनार हुआ था. Why I am saying that it is not quarantine. क्वारंटीन होता तो जो सेंट्रल सीएमसी का जो सेमिनार था वो तो ऑनलाइन अटेंड भी कर सकता था. और सर प्रेसिडेंट है चाइना का, बोलता है यार 5 दिन बाद करो, मैं आता हूँ, ऐसी क्या है. या तो, and these are seminars which are not done at the drop of a hat at CMC level. There's a lot of planning goes. So there was something in the air, like they say there is no smoke without fire. And it is evident कि उसके बाद इस साल तो अभी तक 2 ही दफा गया है, एक रशिया और अब ब्रिक्स के लिए आया है, और देख लो कितनों को पर्च करता चला गया है. अब 40 जनरल से और भी ज्यादा निकल गए, अभी तो और भी ज्यादा निकल गए. G20 इकोनॉमिक है आसियान का, ईस्ट एशिया समिट सर, ईस्ट एशिया समिट आसियान का सब स्किप कर रहा है वो. क्यों? ऐसा क्या डर है? जैसे ये पॉइंट है, काइची उसके साथ जाता है, काइची इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गार्ड, सेंट्रल गार्ड ब्यूरो. उसके सेंट्रल गार्ड ब्यूरो के हेड को अभी रिसेंटली पर्च किया था उसने, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम. उसको डर ये है कि मेरा खासम खास मेरे साथ आ गया तो हम दोनों फंस जाएंगे यहीं पे. वो हो गया वहां पे तो क्या करेंगे? जैसे उरुमची में स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी. यार इकोनॉमी का क्या हुआ तुम्हारा? इकोनॉमी तो इज दी पीपल आर गेटिंग हिट बाय इकोनॉमी, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हो. स्टेबिलिटी 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 बोले जा रहे हो. और जो तुमको प्रॉब्लम्स हुए हैं, जैसे इतने बड़े फ्लड्स हुआ है, उसके बारे में I actually don't see any write-ups even in South China Morning Post or Xinhua. What kind of relief effort? क्या कर रहे हो तुम, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ write-up नहीं. If you look at flood तो चले गया सर. Flood is gone out of the main news. बंदे इतने मर गए तुम्हारे, तुमको यार यहाँ पे इस तरह का हो जैसे स्टेट गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट बदली हो जाती है यार, गिर जाता है गवर्नमेंट. इनको कोई फर्क ही नहीं है. It is like what both Madeleine Albright and Dick Cheney had cheekily said of civilian deaths as collateral damage. जो वेस्ट एशिया में और सब जगह इतने मरे थे इनके बॉम्बिंग में, तो देर cheekily said that is collateral damage. ये भी वही यूज कर रहे हैं, collateral damage. इनके लिए भी people are collateral damage है. फ्लड्स हो गया, just too bad, हम बच गए, that is collateral damage. Sad. Next. Yeah, there are a lot of policies he has been forced to push back. Zero COVID के ऊपर तो काफी प्रेशर आया होगा within CPC themselves, because for the first time ever in the history of PRC, इसका नाम लेके, शी जिनपिंग का नाम लेके इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ जी. Even during the Tiananmen Square जो प्रोटेस्ट उसके पहले भी शुरू हो गए थे, it was not by name. नाम किसी का नहीं लिया सर. हाँ, they were only protesting for having more openness. जी.
not by name. ये तो by name they were naming Xi Jinping himself and that he should be thrown out. जीरो कोविड ड्रॉप कर लिया, लोन्स है। अभी आप देख लो 1.5 साल तक एवरग्रांड का रोक के रखा था। अब एवरग्रांड का ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो 22 सेंट पे चला है यार, बिल्कुल क्रैश हो गया, 90% खत्म हो गया तुम्हारा। प्राइवेट कंपनीज के सबको चीर फाड़ कर दिया, अब कहते हो नहीं प्राइवेट कंपनीज विल बी केप्ट एट पार विद एसओईज। कौन भरोसा करेगा यार तुम्हारा? मतलब मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, सॉरी, ये जो एक वो क्या है उनका फॉरेस्ट समथिंग जो उनकी कंपनी है जो अभी गई है ऊपर नीचे, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को उसकी लगती है, इनका जो इनफ्लो आया था वो 40 बिलियन तक इनफ्लो आया इनका, ठीक है, पिछले 2 साल के अंदर 40 बिलियन डॉलर्स। डिफॉल्ट कितने का हुआ है सर पता है? 23 मिलियन डॉलर्स। वो तो बताते नहीं, नहीं, दैट्स द फर्स्ट। they are very opaque. You see, they have been taking money, investing in land somewhere else. See, the whole problem starts कि भाई 1994 उसके 94 के पहले local government used to take taxes. जी। They were allowed and central केवल central projects and military and इसका वो tax वगैरह वो लेके रखते थे। 94 में because Chiang Zemin felt that they were losing control of the provinces, they changed the method of collection of tax and it all became central, and then वो provinces को देते हैं। So the only way the provinces could make money was by selling land. All land is theirs. Anyone who's made any house is only on lease. Remember that. The land doesn't belong to him. It's on lease for X number of years. And for every time lease renewal karna hai, so you have to give the tax on that. So that is how they generate money. And it has become a spiral to attract more people, to create more infrastructure, to show that a lot of people want to come there, keep increasing the cost, keep taking debts, make people take loans everywhere. Everywhere is collapsing now. आपके खाली खोके बिल्डिंग खड़े हैं, बिल्डिंग बने ही नहीं है आपके। अब लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। बैंक बोलता है मैं तेरा फ्लैट कब्जा कर लूंगा, तो वो हंसता है, उसके मुंह पे कहता है फ्लैट बना हो तो ना जा ले ले, खोका खड़ा हुआ एक टावर है, दैट्स अबाउट इट, देयर नो फ्लैट्स। इंश्योरेंस विड्रॉ कर रहे हैं सर अपने लोग। अब दैट इज द होल प्रॉब्लम। एंड जो दुनिया भर को बोलता था कॉमन प्रॉस्पेरिटी, इनको बोलता था कॉमन प्रॉस्पेरिटी, जिसके पीछे वो सारे प्राइवेट कंपनीज, इन शॉर्ट टेलिंग दैट इट इज बैड टू बी रिच। Going back on what Deng Xiaoping said, it is not bad to be rich. And he used to give the analogy of a black cat and a white cat. It doesn't matter whether the cat is black or white as long as it catches the mouse. In the sense that it doesn't matter whether it is a public money or a private money as long as you are taking tax from them. पैसे आ रहे हैं आपको। तो अब चाहे वो बिलियनियर हो, चाहे वो आपके तनख्वाह लेने वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने तो उसका चूना लगा दिया था कॉमन प्रॉस्पेरिटी करके, taking them back to Mao era. Now that is another thing which they have dropped from their lexicon. And also all these CCDI के पीछे पड़ गए हैं। अब aggressive investigations नहीं करोगे प्राइवेट कंपनी के ऊपर, कोई छेड़खानी करेगा तो हमें बताओ। और शी जिनपिंग चुप है, शी जिनपिंग चुप है। उसका जो, and they have said level playing field for the SOE and the private company. बट वही है ना यार, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। People will never forget the way you have destroyed Alibaba and 10 cents यार। How? Who will come? They were your torch bearers यार। They were your torch bearers world over. Everybody used to talk about them. उसी का आपने सत्यानाश कर दिया। Who will forget him teaching a bloody school in Japan यार? जैकमा टीचर बना हुआ था बीच में, जापान में स्कूल में पढ़ा, प्राइमरी स्कूल, सम गवर्नमेंट स्कूल, ही वाज टीचिंग सम क्लास है। अगर आपको ये करके छोड़ो और बोलो कि नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड, नहीं नहीं अब कॉमन प्रॉस्पेरिटी नहीं, शक रह जाता है ना। बट इसमें लोगों का छोड़ो,
Just imagine what is going on in a megalomaniac like Xi Jinping, what is happening in his mind. Yeah. Economy to doldrums. Neither Xi Jinping nor Li Chang have any idea what to do. See, like I earlier said also, 2008 से इनका problem शुरू हुआ है, because instead of putting in money and helping the people, they tried to continue to show that they have a good economy by maximum state expenditure, creating infrastructure, creating worthless infrastructure which was not going to give them any revenue. At some point in time, it will bite. Like what is happening with BRI, excess infrastructure का details तुम्हारे पास थे, वो तुमने डाल दिया BRI में, returns तुमको मिल नहीं रहे, returns यहाँ से भी मिल रहे. That's why you find ghost cities करके. God knows millions and millions of apartment blocks you have made, malls you have made, जहाँ कोई नहीं है, पैसे है नहीं. सो मच सो कि डॉक्टरों और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनसे पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो. सो you have no clue of macroeconomics and even microeconomics how to handle. It can't be opened, it's gone. So you don't know what you're going to do. What will you be left with? Most important, Emperor Xi doesn't trust anybody. He just doesn't trust anyone. जिनको अभी ये सारे, अब किसी को, he can't even blame anybody यार. जिनको हैंड पिक करके लाया उन्हीं को तो तुम पर्च कर रहे हो. अच्छा, जब हैंड पिक करके लेके आ रहे थे तब चोर नहीं थे, नाराजगी होगी तो चोर हो गए. यानी किसका उल्लू बना रहे हो यार तुम? यानी वो तो चोर पहले भी थे, फिर लेके क्यों आए? Right. So that's why I said the veneer of anti-corruption is running very thin. He was missing from the business forum. Of course, one of the business was the sinking of the nuclear submarine. देख लो इसका, इनकी मंशा देखो कैसे है यार. They haven't even openly stated to anybody, and there is no memorial ceremony or anything for those sailors who and all who have died here. Openly कुछ बता भी नहीं रहे हो कि was it having nuclear arms or not. क्या था उसके अंदर? It's a nuclear submarine. That is sad. I mean, जो गया उसको तो रिस्पेक्ट कर लो यार. सेम थिंग गलवान, इतने सारे मरे थे, बड़े दबाव के बाद 4 का नाम लिया था, ये इसका तो अभी तक कुछ नहीं दिया. और इसके स्पीच में जब 20th पार्टी कांग्रेस था, कलर रेवोल्यूशन, and he spoke of black swan, spoke of green rhino. इन्हें क्या इकोनॉमी के बारे में बात ही नहीं की. ऑल सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी. And while at security, let us be clear, if you look at PLA's expenditure पिछले 10 साल क्या पिछले 20 साल में ले लेना, the amount that China spends on defense is less than what they spend for internal security. ये याद रखिए. The amount of money allocated for internal security is more than what is allocated for defense. What they show, and Cipri and others also say that there is a lot of hidden. So if there's a lot of hidden in the defense budget, I'm sure there is a lot of hidden portions in the internal security. Only leader, like I said, PRC में जिसके नाम से personally protest हुआ है last year November. And if you go back in history, yeah, always either the king has been killed or has been deposed by others, and it is always when there is a natural calamity, and natural calamity leading to economic disaster. Most important. That is the biggest worry, that there is an economic disaster and there is pressure building up against Xi Jinping. And he can't blame anybody because it is his own doing. पुराने जमाने में तो येलो रिवर को ब्लेम करते थे because it used to shift its banks totally, almost about 100 plus kilometers को उसका shift हो जाता था where it would go into the sea, leaving the rest of the people having famine,
ऊपर वहां पे फ्लड्स एंड स्यापा हो जाता था, एंड देन पीपल यूज्ड टू से दैट ही हैज लॉस्ट द मैंडेट फ्रॉम हेवन. एंड जो जितना मिडिल किंगडम बोल रहा है, आई फील ही इज गेटिंग वरिड that people are thinking that he has lost the mandate from heaven to rule China. It is his own. Because अब आप देख लो, अपने ही बंदों को पर्च कर रहा है, किसको ब्लेम करेगा? कौन ट्रस्ट करता है आज? अंदर तो कोई ट्रस्ट नहीं करता सीपीसी को, बाहर इस तरह से है कि दो ही देश हैं जो कह सकता है कि हाँ कुछ मेरे साथ है, कुछ एक नॉर्थ कोरिया, वो भी एक सन की है, पता नहीं किस टेंजेंट पे निकल जाए, और दूसरा पाकिस्तान था, अभी उसको अभी भी शक हो रहा है कि भाई इस एयरबीएनबी में अब कौन है, निवास है, यूएस की मैं, उसको ये भी नहीं पता कि इस एयरबीएनबी में किसका निवास है. लोग बात करते हैं उससे क्योंकि बात करना है, क्योंकि वही है हेड. अब फॉरेन मीटिंग में एम्बैरेसमेंट हो रहा है, मैप में सबने रिजेक्ट कर दिया है. अगर कल को मैं मैप में बना के लगा के दिखाना शुरू कर दूं, टिबेट एज चाइना ऑक्यूपाइड टिबेट शेड कर दूं, चाइना ऑक्यूपाइड ईस्टर्न तुर्किस्तान, या चाइनीज ऑक्यूपाइड यूनान, चाइनीज ऑक्यूपाइड मंचूरिया, चाइनीज ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया, क्या बोलेगा वो? और फिर मैं उनको बोलूंगा कि यार डोंट गेट एक्टिवेटेड यार, ये जैसे ही मैप है. क्या है, जस्ट मैप है, तुम ऐसी छोटी बात मैप है, करते हो. जस्ट मैप. और इसको और हम नहीं निकाले, ये बाकी देश आसपास जो भी उसमें अभी खुंदक हो गए ना, उन सबको दिखा दो कि भाई साहब वो भी ये सब मैप डालना शुरू कर देंगे, फिर क्या बोलेगा ये? what cut letters, and I would say this is the time to reverse cartographic warfare on him and show all these Absolutely. areas as occupied. And I like it, you have shown Qinghai and Kamdo also as part of, which is the original Tibet, जी, which is the original Tibet. ये तो काट कर रखा है इन लोगों ने सर टिबेट को भी. Yeah, Yeah. so बिकॉज किंगय वहां पर वो मैसेकर हुआ था ना सर, उसकी स्टोरी अगर uh, टिबेटन्स को पता चल गई तो जो भी yes, बचे टिबेटन्स वो मार देंगे इनको. सो देव केप्ट किंगय एज पार्ट ऑफ हान चाइना, yes, क्योंकि they've किंगय का included मैसेकर की Qinghai हिस्ट्री and निकली बाहर. portions of eastern portions of Tibet, also the Chamdo area, as चामदो, part of Han China. किंगय मैसेकर इज. या ये तसल्ली से जो भी देख रहा है चुस्की लेके देख लो. नहीं, मैं तो अभी ये एक चीज बोलना चाह रहा हूँ सर, इफ यू डोंट माइंड गाइज, अभी 1200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमको इस टाइम पे. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, शो देखने के बाद पॉज करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या फिर आप इसको गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, बट आपके सामने है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा. व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये जाना चाहिए चारों तरफ, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, हर लिंक्डइन सब जगह. भेज दो ठीक है. और डाल दो चीनियों के लिए. यार गुस्सा मत करना भाई, ये एक मैप ही है और कुछ नहीं है. एग्जैक्टली द वर्ड्स व्हाट दे हैव यूज्ड अगेंस्ट अस एंड ऑल द अदर कंट्रीज whose territories they are taking up. देन यू नो, देखते हैं. अगर आप, if you as Chinese, and I'm going to speak in English for this because we do have certain Chinese with us, and I want to pass that message across, that if you as the flag bearers of the CCP, and I'm saying CCP because a lot of all the Chinese people are not part of the CCP, 90 million ही है, उसमें से भी lot of people are leaving. So if you as the CCP can take out maps, every Indian sitting here will start taking out maps. And please try and deal with, let me say about, if nothing else, 50, 60 crore maps, if nothing else. ठीक है. And if it comes hardcore, then it will be 1.4 billion people sending out maps, which is more than your population. ठीक. So please, 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 to the Chinese people right here, two can play at this game. Sir, एक
थैंक यू सर, ये तो बड़ा मतलब दिस वाज, आई मीन you have literally बोलते हैं ना, we've rubbished it, and that's something that one thing we need to put across, that यार ऐसा है guys, ये वीडियो कितने लाइक्स हैं? सबसे पहले यार 1200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, लेट्स सी हाउ मेनी लाइक्स आर देयर। डिसलाइक्स तो मेरे को पता है वो 10-20 डिसलाइक्स होंगे, जो 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 मेरे चाइनीज दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार यहाँ केवल पर बैठे हैं। चाइनीज ही नहीं, वो तो पाकिस्तानी भी होंगे ना, आईएसआई वाले। नहीं नहीं सर, वो सर वो चाइनीज सिंबल्स पढ़ा रही है लोगों को, एक मिंग फू करके है, वो ओके। चाइनीज सिंबल्स पढ़ा रही है लोगों को कि शी जिनपिंग का ऐसा सिंबल होता है, उसका ये होता है। जैसे हम तो बेवकूफ है, हमको पढ़ा नहीं आता। शी जिनपिंग इज वाइट मैन बाय द वे, वाइट फ्लैग मैन। ठीक है। तो सबसे पहले यार गाइस लाइक करिए, अभी तो कोई 679 तक लाइक्स हैं। सर हमारे पास करीब करीब 15-18 क्वेश्चंस हैं, रिक्वेस्ट इफ वी कैन जस्ट रोल थ्रू या देम, मोस्ट ताकि वेलकम, मोस्ट वेलकम। वी कैन डू दिस। एंड गाइस कल दोपहर में 3:15 ये जनरल नारायण ने इस बारी डबल धमाका दिया है हमको वीक के अंदर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ भारत। ठीक है, ये शो को कभी मत मिस करिएगा। कल टुमारो आफ्टरनून, सैटरडे 2 सितंबर, 3:15 इन द आफ्टरनून। तो सर सबसे पहले तो गाइस लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्प्रेड द वर्ड, लोगों को बताइए इसके बारे में। ठीक है। We missed our target of 50,000 subscribers by 31st, but we are still pretty close. 46,800 to ho gaye hain. So help me out, grow. That would be great. And if you can, do help out, contribute towards the effort. The QR code is up there, or you can become members, or you can send us a sticker, super chat. Anand, thank you so much for becoming a YouTube member. JP, kal Saturday will be much awaited Tamil Sanskrit show. So isko yaad hai Yes, sab. it's very much there. JBJP is very much there. He is not going to let you go, sir. No, no, it is She there. not coming for G20 means mischief coming at LAC. Thank you so much, JP. आता तो भी होता यार, वो तो मैं कल भी बात कर रहा था। Yesterday only, I think I had my show on Gunner Shot where I said that you cannot let your guard down. These coming days, since he's coming under so much pressure internally, कहीं ना कहीं हिट आउट करने की कोशिश करेगा. So you cannot let your guard down. In fact, I was recommending that we have various levels of border protection के levels होते Escalation. हैं. We need to increase that level, and not only your LAC, your LOC also, your internal security also. You know what George Soros mischief he is up to. He will also do the mischief with them. They will also attempt to create troubles for you in the internal security. I have no faith in the current lot of opposition leaders. I am bluntly telling it. बिके हुए हैं most of them. Not everybody, but most of them बिके हुए हैं. Either to George Soros or to the Chinese or to the Pakis. Because the language which they talk, you can make out from the language which they talk. All those who talk the language of the Chinese, the Pakistanis, or George Soros, remember, I take it they are on their pay. So you got to be careful. आए आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं होता है। जब मामल्लापुरम में आ रहा था तो आपका नहीं हो रहा था वहां पे डोकलम में। लीके शांग आ रहा था तो आपका राखी नाला देवसांग 2013 में नहीं हो रहा था। हम वुहान जा रहे थे 2014 में तो हमारे नीचे आपका विच इज दैट एरिया सेम Dolab, ईस्टर्न लद्दाख में फिर शुरू हो गया था। तो वो आदत है उनका, आदत है उनका यार। Baroti and हाँ, बाराहोती में थोड़ा सा नहीं, ईस्टर्न लद्दाख में भी था। वो आदत है उसका यार, और कोई अकल आता नहीं है उसको। बट दिस टाइम मेरा रिकमेंडेशन रहा है कि अगर कुछ करता है, हमारे पास क्विड प्रो क्वो QPQ बोलते हैं, उसके कई QPQ. ऑप्शंस तैयार। एक दो ऑप्शंस हमें लेके उसके इलाके में जाके बैठ जाना चाहिए कि आ जा भाई बात करने के लिए। जी। देन ही विल अंडरस्टैंड। JP, Lee the mama, Wu the taya, Hu the fufa, Fu the chacha, maha. Thanks so much, brother. He's quite a funny character, I must say. Naveen, thank you so much for your contribution. He says, historically, we've seen the two armed forces
armed forces factions lining up in opposition, leading to civil war. With regards to China, what are the dynamics between the internal security police force versus the PLA? How are they viewed by the citizenry? Naveen, very good question. Uh, Firstly, both the internal security police, that is the PAP, People's Armed Police, and the PLA come under the CMC. And they are both the militia of the Communist Party of China. And citizenry is not very happy with either of them. Openly उन्होंने बोल दिया ना कि तुम तो, they have linked CPC as Nazis and these people as SS. In historically Nazi party का जो militia था, that is SS, and the German armed forces was called the Wehrmacht. So they openly said that this is not Wehrmacht, this is the SS, means openly बोल रहे हैं. But मेरा व्यू थोड़ा अलग है. ये पीएपी और पीएलए के लोग जो हैं आम आदमी से आते हैं. 40% are conscripts. They have not come here for fighting. Most of them have not come here for fighting. उनके लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, उसके पास भी हथियार. जो ऑफिसर्स हैं उनके भी एक्सटेंडेड फैमिली आर गेटिंग अफेक्टेड यार. Unemployment rate is touching 50%, and which is just the urban area. Rural area को मिलाओगे तो पता नहीं क्या हो रहा. There are some reports coming out. Some of the schools are telling that you will not get the graduate degree till you don't show that you have a job. और उनके प्रोफेसर्स उनको आइडिया दे रहे हैं कि आप एक ई कॉमर्स टाइप का क्रिएट करके 2-4 सेल दिखा दो, और आपस में वो स्टूडेंट्स खरीद लेते हैं और वो दिखा देंगे कि यू हैव एन ई कॉमर्स जॉब और हमको आपको डिग्री मिल जाएगी. एंड जस्ट बिकॉज ही हैज दैट ई कॉमर्स लिंक ही बीइंग शोड एज एम्प्लॉयड. You see the wheels. And when everybody gets affected, PLA and the PAP comes from the common man, yeah, they get affected. Yeah, The absolutely. coup proper will only happen if there is a civil war. That will only happen if this splits the PAP and the PLA. Otherwise, you will have a coup within the CPC. A coup within the CPC, either to cut his wings. I feel more and more it is to corner him and throw him out, force him out, edge him out. Because civil war hoga, so you don't know whether the CPC will come to power or not. May Ji. not. Ji. And you may have a democracy. Gurleen Singh, thank you so much for joining in. Mr. Gunjikar, thank you so much for your super sticker. He also has a question. General Saab, Jai Hind, how can we really compete with the PLA with regard to equipment and tech in all our forces? Next, by 2030, how do you see our tech and joint manship? Gunjikarji, I have been asked this question before also. When we say technology in force, don't get carried away by what you see in Hollywood. That is pipe dream. Mungeri Lal ke Haseen Sapne. Please remember, whichever army it is, the common soldier who is your teeth, who is your fighting edge, has average intelligence, and he has come in here. He doesn't know much about technology across the world. So you need an effective technology which helps you to take your decision faster and act faster than the enemy. That is the technology and equipment you are looking at. I'll give you the example. I give the example of my unit. I come from the Pune Horse, one of the most decorated units of the Commonwealth. 65 war, 71 war. We fought with Centurion tanks. Centurion tanks का टेक्नोलॉजी बनना शुरू हुआ था 48-49 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर. बिगनिंग 50s में बना था. 65 वॉर में भी एंड 71 वॉर वी फॉट विद सेंचुरियन टैंक्स. इट हैड 84 millimeter गन. Pakistanis had the state of art pattern tanks which had just been made and the Americans had given them, and they had 90 gun. 65 war, my unit alone destroyed 74 of their tanks to 9 of us. 71 war, my unit alone destroyed
39 of their tanks to 7 of us. Wow. 90 टैंक आए थे हमारे अगेंस्ट इन 71 वॉर. 39 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड. 65 वॉर में 45 and about 135 तकरीबन about they were about 170 180 tanks roaming around. We were there and there was one more unit there, Hudson's, another wonderful unit, fighting unit, fought very well in both 65 and 71 wars. Now we were fighting with Centurions, Hudson's also, and Puno Horse also. लड़ाई में देख लो 65 में एयरफोर्स का ले लो, हमारे पास नैट्स थे, मारूत थे, हंटर थे. They had their latest Sabre jets and starfighters. हुआ क्या? उड़ा दिया उनको. It is not the equipment, it is the man behind the equipment and how you use it. बहुत ज्यादा टेक्निकल कर दोगे उसको समझ नहीं आएगा कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लड़ना है. And the opposition has won the day. Remember, as a standard norm ये याद रखना, जिसने पहले गोली चला दी 84% chance of success that you will hit the target. What is the chance of survival of the opponent then? 16%. Now when he fires, supposing I have missed, that's how he survives. 16%, 84% of 16%. That means just by firing first, I have 84% chance success to his surviving and firing and hitting me, which is 11%. Just blindly technology के पीछे मत जाओ. Technology has to help you do this at the ground level. टेक्नोलॉजी बाकी पीछे रखो यार, जहाँ पे ट्रेंड मैन पावर होता है, सीनियर बंदे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, रॉकेट स्कोर शॉकेट के ये होते वो, हैं, हाँ. वो ऊपर के डिसीजन मेकिंग जहाँ पे अगले 48 घंटे 72 घंटे 96 घंटे क्या होना है वो देख लेगा. जमीन पे जो आदमी लड़ता है ना, अगले 5 मिनट के अंदर क्या हो रहा है उसको वो देखना होता है जी. तो टेक्नोलॉजी इज देयर, यस, बट हॉलीवुड देखना बंद करो या Naveen, हॉलीवुड को एक्सट्रापोलेट मत करो. Naveen, thank you so much for sponsoring 5 members on the channel. Himanshu ji says thank you so much, and he says General Ryan, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें. प्रणाम जी, प्रणाम. Subroto Day, thank you so much for your contribution. He says, General Ryan, you have $4 this taking it to the cleaners. Thank you so much. May I request you to comment on your comment below? Let me just find that comment here. Subroto, just give me a second. I will be able to trace it out. Yeah, I got it. I will just put it up. There are so many comments, so just thoda sa difficulty ho jata hai. We should look into the areas of development that has taken place in China in the past 40 odd years. I have a strong feeling that it has prioritized to the original China. बिल्कुल सुब्रोटो डे, you have hit the nail on the head. Original China, and that too towards the eastern seaboard only. If you go to the Google map, look at Google Earth, look at the night shot of China, and you will see where the lights are, which shows where the development is. It's all on the eastern seaboard. They're following to the T the methodology laid out by Sun Yat-sen in 1922, which told about international development of China, where पूरा ईस्टर्न सीबोर्ड को कैसे डेवलप करना है. He wrote nothing about rest of China. So these people also blindly following that only eastern seaboard, they have done nothing about rest of China. Original China भी पूरा डेवलप नहीं है, ईस्टर्न सीबोर्ड वो पूरा रेलवे लाइन तक उसने ड्रॉ करके दी है, वैसे ही बनाया लोगों ने. प्रसाद जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर स्टिकर. John Doe says they put the map after BRICS, but before G20. This means BRIC informally did not go well. Nothing more could be had by coming to the G20. Worse, he could still face embarrassment if he came. या ब्रिक्स में गया, ब्रिक्स में एम्बैरेसमेंट हुई उसके यार, उसके पर्सनल जो असिस्टेंट था, हु वाज हिज ट्रांसलेटर, उसको रोक लिया था. इसके पहले एससीओ में भी ही डिडंट हैव हिज वे. Like I said at the beginning, John, that both in SEO and BRICS, the only he felt the only opposition was going to be by India, but he didn't realize the power of Indian diplomacy, where everybody stood with India and not with China. जी. Harshvardhan ji says Xi Jinping afraid for his life.
क्या पता है, पैरानोया तो है ही है. Alpha Jam 26 says if Xi Jinping comes to India, Indian government should assign a hotel near Majlu Gatila, which has Tibetan population in Delhi. It's a funny comment. इसको डर तो वो भी लगा था ना कि आएगा तो. Just imagine your 3 ex-service chiefs were attending a security event in Taiwan, and another ex-chief was attending a seminar where he shared the dais not only with the retired ex-prime minister of their government in exile, but also with an Uyghur activist. And he Freedom spoke fighter. about freedom for all and freedom for not Xinjiang, Eastern Turkestan. East Turkestan. डर तो लगा हो. Ask Aadi, pranam to both of you, sirs. Thank you so much, Ji. If you're forced to choose between 11 Jinping and Kim Jong-un, whom will you choose as your neighbor? Neither. 11 पागल हूँ Jinping. मैं. If I have to choose, मतलब मैं खरीदने जा रहा हूँ. पागल हूँ मैं. आपको पता है ना, किसी ने एक बारी बोल दिया था इसको 11 Jinping. Batra ji says, if he keeps purging who he think is not with him, he won't be left with only second or third grade CCP members. How is he going to manage the country with novice leaders? Your thoughts on it, sir? जगप्रीत बद्रा जी बहुत सही बता रहे हैं. अभी तो ऑलरेडी इज इनटू हिज सेकंड एंड थर्ड लेवल ऑफ लीडर्स. कंट्री का तो भट्टा बैठा दिया इसने. एक ऑफलाइन इनसे बात कर रहे थे दैट ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद माओ. चलो माओ ने भट्टा बैठाया, काफी भट्टा बैठाया, बट ही हैड नो इकोनॉमी वर्थ हिज नेम. His only claim to fame was he was the leader who fought, who took that long march, बचा के ले गया लोगों को. वहां से उसने स्ट्रैटेजी पूरा बदला, सबवर्शन ये वो कर कुरा के, and he made CCP what it is, and he won the civil war. At least he had that. इसके पास तो economy was given on a damn platter यार. फौज भी थी इसके पास प्लेटर में. सबका कचरा कर दिया इसने. सबका कचरा कर दिया. तो मतलब क्या, he had always thought that he will be written in golden letters that he was the king, emperor who gave everything to China. I think now he is getting more and more worried that it will be written that he is the emperor who destroyed China. Correct. Manage country, you very sure है. ली चांग को लेके आया, उसको इकोनॉमी का कुछ अता पता नहीं. उसमें he was caught fudging figures, sir. Yeah. Hainan mein. So paranoid. She's so paranoid, like Stalin, who purged military officers and generals in red purge, and is trying to do something similar. Your view on it? Similar case, doing exactly that. Not just military officers, he's purging even the CCP of people. Yeah. Raghunandan was listening to our conversation on the phone, I think. All right. Shritik Kothari says. By the way, I'll just add what इसने जो स्टालिन ने पर्ज किया था. One of the most famous brains of military, Tukhachevsky, उसको पर्ज किया था. The West had no clue about operational art and deep battle. He had written a précis for the Soviet Red Army of divisions, armored divisions, tank corps, the mechanized infantry, deep battle, simultaneity, operational art, सारा कुछ का इसने वो लिखा था. And he was purged. इसके साथ जो बंदा था ट्रियांडे फेलो, वो बच गया था. उसको पर्ज नहीं किया था, लोअर लेवल में गया था. After all his initial people were either killed or surrendered to the Germans after thousands of lives were lost. He brought in Zhukov and others, and they went through all these pamphlets, and then they recreated all those divisions and attacked. Shritik says, sir, do you ever think of a permanent, long-lasting solution for us to the Chinese problems? Skirmishes, posturing, solidarizing. Independence of Tibet. Simple. One word. Independence of Tibet, independence of Yunnan, all your problems also. And independent Eastern Turkestan. No problems solved. We've never had historically ever any buffer with China. China historically has never had control. Been our neighbor also.
Yeah. Tibet and Xinjiang or Eastern Turkestan were never part of China. What is China is east and south of the Great Wall of China. The Great Wall of China over various dynasties till the Ming dynasty was made to protect them from the raids from these people, even from Tibetans, by the way. Okay? So east and south, that is the Han heartland, that is China. Full stop. Everything what he says is, yeah, everything what he says is story. I will even chop off that central thing which is going, which is called Gansu. Towards, yeah, Sichuan and Gansu, Gansu, I would even cut that off, and if required, give Sichuan to Tibet and Gansu to Xinjiang. Mongolia. Partha says, any update on the mysterious sinking of a Chinese submarine near Taiwan? They Other won't be than as the well. initial details that were there, उसके बाद कुछ नहीं. Karan says, ask Adi what kind of help China is sending to Russia for war in Ukraine. Is there anything that we can do to reduce Russia's reliance on China? Something करण is जी happening. करण जी इसने जो मैप बनाया है ना अभी, थैंक यू वेरी मच, ही हैज रीलेड द क्लेम on that island in Usuri River. Usuri River. Russians He are has pissed antagonized off. the Russians again, pissed off the Russians They are again. pissed off. Right? 94 या 95 में इनकी ट्रीटी हुई थी. After the Chinese got a thrashing there in 67, 94, 95 में ये treaty हुई थी, and they had agreed on the alignment that island was with Russia. Now to tear all that and show that as part of China, thank you. He has antagonized the Russians also. हम कर रहे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है. जब ये खुद ही खड्डा खोद रहा है तो सामने की. He's the Imran Khan of China, sir. Chalne do. Maitri, he says, first, a huge gratitude. It's safe to say Xi Jinping Mao 2.0 is not willing to leave China in fear of being replaced. There was some news of him being overthrown in the past. Any relation? Sir, before you answer, I know we've answered this question. I wanted to just bring this out. Here is a girl who actually spoke about this when we were entering our second, third slide. Yeah. So I'm Yes. glad people have started thinking. Yes, Commendations to you. Maitreyi. So I just wanted to show that. He's a very, I would call him a very poor version of Mao 2.0. And of course, his fear is because internal, whatever he has created his own. And there was a link, SCO से जो आया था वापस, so there is a link. Whatever the report, like what Aadi and me were telling, that even if he was in quarantine, there is a CMC का meeting है, seminar हो रहा है, discussion हो रहा है, online कर सकते थे. CMC, you are the chairman of the CMC, you could have held it 14 days later. One more thing, for the past 5+ years, we were doing good, unquote, China, of Chinta of China. And that is all to get possible, like you, Mr. Adi, and God bless you. Thank you, sir. About General Sir, and pleasure listening to you both. Thank you so much. Rameshji asked, General Sir, will Quad jointly start escalation with China and dismantle the country's prowess? I would say the Americans, as part of Quad, what I have heard of, openly आएगा नहीं, what I have heard of is they have given them a warning. Anything he does against Taiwan, India, or anywhere along his eastern seaboards, the artificial islands in Spratly and the Paracel Islands where he is sitting and Scarborough Shoal will be leveled to the sea. And I think he realizes that the Americans mean business this time. तो वो भी डरा हुआ है. तो एट बेस्ट छोटा सलामी स्लाइसिंग टाइप कुछ करने की कोशिश करेगा. क्वाड को एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है. देयर आर पीपल इनसाइड चाइना हु विल एंटेगनाइज हिम कि कुछ करो, उसको इल्ली करेंगे, बिकॉज ये नो कि ही विल फेल. देयर विल बी लॉस ऑफ फेस. अकेला पड़ जाएगा, देन दे विल बी एबल टू थ्रो हिम. Jay, thank you so much for your super sticker. Ashish Mishra, thank you so much for your contribution. He said, General Sir, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें. आयुष्मान भव. And आप और आदि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं countering fake narrative. Thank you so much, sir. आयुष्मान भव. Much pleasure listening to such comments. Batraji again says,
Did Xi Jinping get overconfident and started making more blunders, or is he too dumb-witted to calculate where his actions would lead him? Your view, sir. Sir, may I answer this once if you don't mind, sir? या प्लीज 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 Combination, a healthy combination of both of them. बिल्कुल सही, मैं भी वही बोलने वाला था. Healthy combination of both, and he's been led on by his people, because those people are also a healthy combination of both of what Xi Jinping is. People who have known Xi Jinping, who have now no longer stay there, Hong Kong भाग गए हैं या सिंगापुर भाग गए हैं या दूसरी जगह भाग गए हैं, who studied with him are very clear that he is very thick. But the only thing about him is, एक बार अगर उसने दिमाग में ठान लिया कि मैंने ये करना है, come hell or high water, he will go ahead and do that only, irrespective of whether that is the most useless thing to be done, and which will spoil a lot of other things. He is not interested. It's like a bull in a china shop कि मैंने वो चाइना तोड़ना है तो तोड़ना है, बस. So that is his problem. Last couple, sir. Vamsi Saab says, King of the Dunghill is better than being deposed. So she is trying to cut off the legs of the PLA so they can't collude with non-Shi factions and thereby avoiding a coup. I think that's a very smart comment. Yes, that is one view you can take, but I think it's not easy to cut the legs of PLA. That's there, sir. But Remember, Xi Jinping doesn't have the weapons. The weapons are with PLA. Yeah. ज्यादा पैर काटने लगेगा तो हथियार घूम जाएंगे. जो पैर काटा है ना, हाथ नहीं काटे. हथियार हाथ से चलाते हैं, पैर से नहीं. But a very well thought of comment, sir. I must compliment Mr. Manu. So just now, 2-3 just fun types, sir. Ming Wu is from China. He says, I have he, she, I think it's a she, but I just have one question: why Indians have such big hostility towards China? If I may, personally, I don't think the CCP will pay great importance to those frontier territories. So why did you come into Eastern Ladakh? Buddy, I'd run for your life right now. Don't do this. The antagonism is because of what Xi Jinping has done. Were we antagonistic when Hu Jintao and Jiang Zemin were there? We had best of the relations. Yeah, things were nice. It is he and he alone who spoiled it. Bhartiya ji says there are reports of China building tunnels in excitation. If looks like nuclear arsenal storage and bunkers. ऐसा है, न्यूक्लियर आर्सेनल स्टोरेज तो नहीं है, हथियारों को छुपाने के लिए, लोगों को छुपाने के लिए होता है. बट once you're building a tunnel, it can't be stopped. It's not the days of the old. He's still fighting, I would say, by making these tunnels. He's fighting a second or third generation battle where ISR was not there. Today ISR is there. I can pinpoint exactly where his things are. And so I have a fourth generation fuel air explosive weapon which is called a thermobaric bomb. वो bomb डाल दिया, entrance बंद हो गया. That's it. जो अंदर रह गए वो तो फंस गए ना अंदर. Problem is these monkeys are not seeing in China. They're not seeing what's happening to the Ukrainians. Yeah, जो है वो अंदर हो गए. I don't even have to carry my aircraft till that place. Yeah. Free Julian Assange says, "Hey India, this is for you. Love from Canada." Thank you. Infected 420 says she's the Jin of Bushra. By the way, his wife is, I think, a singer. Xi Jinping's wife is Xi Jinping. Yeah. She's in the military band, sir, and she's a major general. By the way. वो तो इसने बना दिया. With no disrespect, sir, माफ करना. नहीं, वो तो गाना गाती है, entertains and गाना गाती है, और शी जिनपिंग की बीजी है, तो आई एम सरप्राइज कि मेजर जनरल पे ही रखा है, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बनाया. सर उसको तो मार्शल बनाना चाहिए सर. Naveen, your comment at the end. Thank you so much for your contribution. General Sir Aadi, great fight session. Fun question. Could you contrast Putin versus Xi as authoritarian leaders? Who has a better grip? I'd say Putin. Wow. See, has Putin done any of the purges like the way she's been doing all that? Yeah, well, but those purges are very softly done, not. उसके जो purges हैं, I'll tell you what it is. The Americans were wanting to buy off their oil and gas companies. Yeah. They almost got it. That was when the oligarchs and all were ruling the roost under Yeltsin.
And the Russians still are beholden to Putin, that he's the one who came and pulled Russia back from the brink and made sure that the West is not able to bite. His deal with the oligarchs was that you will not sell these jewels to the West, and you will not interfere in politics. And his deal with Yeltsin was that I will not touch your family will not enter politics. He still looks after Yeltsin's family, by the way. Okay, and he's the only oligarch he got after was Khodorkovsky, because he almost sold it to Condoleezza Rice's ExxonMobil. Yeah. और आज वो जिंदगी भर के लिए जेल में है. And he got into politics. He went against Putin foremost. And एक दो हैं जिनको eliminate किया है इसने, who were going anti-Putin and selling themselves to the West. But if you take today's world leaders' ratings and try and do a rating, who has got the highest rating in the world despite the Ukraine war, Putin will be number one. No, that's there, sir. Last year end, when they had done a rating in Russia, 84% was his rating. People stand behind him, sir. There's no question. And they know that they're fighting for their freedom. Otherwise, the Americans and the West will come and just loot them. Sir, firstly, my gratitude for you to come and take us through this particular thing, because there is no one better who could have done this job. Let me say this. You're being kind. You could have done it yourself. नहीं सर. अरे नहीं सर. See, आपके पास एक background है जो मैं भी I'm just trying to scratch the surface a little bit. And before we sign off, sir, I just want to showcase this map once again. Guys, screenshot लो. Yes. Put it out. ये मैप ये तो मेरे को WhatsApp कर दे. हाँ जी. ये viral होना चाहिए. बिल्कुल. ठीक है. We need to make this viral, and we need to make sure that and a lot of people send it to the Taipei Times. वो publish कर देंगे. नहीं सर, मैं विद ऑल सीरियसनेस गाइस, ये चीज सी देखिए, अगर वो आपके साथ करेंगे, आप भी करिए, बट आई डोंट थिंक आवर गवर्नमेंट शुड डू इट. हमको अपने लेवल पे जो करना चाहिए हम करेंगे. जैसे मैं तो अब बीच बीच में निकल आता है, बट आई एम क्लियर आई विल स्टार्ट कॉलिंग the southern seas as Indochina Sea. Why should I call it his sea? Yeah. And the ones, the Indochina Sea closer to the Philippines, I can call it the West Philippine Sea, because after all, first island chain के बाद तो Philippine Sea है ही है. जी. तो guys, ये जरा मैप शायद वायरल करना है. मैं I am putting it across everywhere. मैं इसको ट्वीट भी कर दूंगा. ठीक है, तो please viral this out. Let's the people watch it. And जाने से पहले please. Yeah, like I was saying, you have the Indochina Sea, you have the Taiwan Straits, and you have the Yellow Sea. हो गया बात है. चाइना का नाम ही हट गया. Done. So ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. Please, and spread the word, guys. Thank you so much. We shall see General Narayan tomorrow at 3:15 in the afternoon. Sir, once again, grateful. Jai Hind. Thank you, Aadi. Thank you for calling me and remembering me. Thank you for your kind words. Jai Bharati.